आंध्र प्रदेश के जिले विजयवाड़ा के एक इलाके में डायरिया की वबा फैली हुई है। वजीर सेहत सत्या कुमार यादव ने जमीनी सूरत हाल जानने के लिए इलाके का दौरा किया। वजीर बल्दी उमूर पी नारायणा रुकने पार्लियामेंट के शिवानाथ भी इनके हमरा थे। उन्होंने आज न्यू राजाराजेश्वरी पेट में वाक़े VMC म्यूनिसिपल स्कूल में कायम मेडिकल कैंप का दौरा किया। इस मौके पर वज़रा और अफसरान ने कैंप में ज़ेर इलाज डायरिया के मरीजों की इयादत की और इनकी सेहत के मुतालिक मालूमात हासिल की। डॉक्टरों और तिब्बी अमले के साथ बातचीत करते हुए रियासती वज़रा ने फराहम की जा रही सहूलियात का जायज़ा लिया और मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतरी के लिए अहम हिदायत जारी किए। Problem health department is taking care, and our collector and commissioner, they are taking all precautions actually. We stopped the public work actually, and our public health department, they are actually took the samples and they sent it for labs. We are waiting for the lab report. Some diarrheal cases reported in Rajarajeswari of Vijayawada in the past 3-4 days. We alerted the district administration, also the health department, and we are organizing a special camp in Rajarajeswari area. There were almost 141 cases so far, but there is nothing alarming. All are stable, all the patients are stable, and because of the initiatives, measures taken by the health department and district administration, the situation is under control. And initially, there were people came with 20, 30, 25 episodes a day. Now people are coming with 3 to 4 episodes a day. Because of the organization of, because of this medical camp, health camp in the locality, people are the confidence levels in the people have gone up, and the government is taking every measure to